যদি রাহুল গান্ধী RSSৰ দুৰ্গা নাগপুৰত ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ কৰি আছে তেন্তে তেওঁ ইয়াৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থ বুজি পাইছে। কাৰণ আমি হাজু কংগ্ৰেছে এই বিশাল সমদলটোক সম্বোধন কৰিছে। নাগপুৰৰ ভিতৰত আলোকচিত্ৰ বিচৰা হৈছে, কিন্তু এই ৰেলীৰ অৰ্থ বুজি লওক। এই ৰেলী এনে এক সময়ত আহিছে যেতিয়া ৰাজেশ কুণ্ঠে নামৰ এজন RSSৰ কৰ্মীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিৱান্দি আদালতত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ বিবৃতিত কৈছিল যে মহাত্মা গান্ধীৰ হত্যাৰ বাবে RSS দায়ী। ৰাজেশে এই বিষয়টো আৰু গতি লাভ কৰা বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁৰ আদালতলৈ গৈছিল। বিষয়টো ইয়াতে বন্ধ নহয়। 16 ডিচেম্বৰৰ এই তাৰিখটো বিবেচনা কৰক। ৰাহুল গান্ধীয়ে অমিত শ্বাহৰ বিষয়ে দিয়া এক বিবৃতি সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰৰ MP MLA আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আদালতে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত স্ক্ৰুবোৰ কঠোৰ কৰি আছে। আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁ কি কৰে? এই যুগত আৰু এই সময়ত তেওঁ নাগপুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰে, যি হৈছে RSSৰ দুৰ্গ। এক প্ৰকাৰে ই এক শান্ত। কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কিয় প্ৰচাৰ চলাই আছে? কিয়নো কংগ্ৰেছক নিৰন্তৰ সমালোচনা কৰা হৈছিল যে কংগ্ৰেছে জোৰ নিদিয়াৰ কাৰণ কি, আৰু এইটো নহয়। কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, যিটো মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মুম্বাইত শেষ হ'ব। 6200 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা। এই ৰেলীত ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই যুঁজটো দুটা মতাদৰ্শৰ মাজত, সেয়েহে এই যুঁজ অতি কঠিন। তেওঁ কি কৈছিল শুনিব। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच। ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল এফালে কংগ্ৰেছ আছে যি গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধত বিশ্বাস কৰে, কিন্তু আনফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি য'ত একনায়কৰ চিন্তা চলি আছে, অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰা। আনহাতে স্বৈৰাচাৰী চিন্তাধাৰা, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতাসকলেও এই স্বৈৰ শাসনৰ চিন্তাধাৰাৰ ধাৰা অসুবিধাত পৰিছে। राहुल गांधी एक बीजेपी का MP मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के MP पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी, तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता, मैं हूं बीजेपी में मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप MP हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे। গতিকে এটা কথা নিশ্চিত, যেহেতু সময় পাৰ হৈ আহিছে আৰু মোদী চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহৰ চাপ বাঢ়ি আহিছে, কিয়নো ৰাহুল গান্ধীৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্ক্ৰু কঠোৰ হৈ আছে। আমি ৰাহুলে নামটো পঢ়িব বুলি আশা কৰা উচিত আছিল, কিন্তু ই তেওঁক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছিল। পাহৰিব নালাগে
কালি প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে ধন ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাদ্ৰাৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁলোকে অভিযুক্ত কৰা হোৱা নাই, তেওঁলোকক অভিযুক্ত কৰা হোৱা নাই, কিন্তু তাইৰ নাম লোৱা হৈছে কাৰণ এই গোচৰটো তাইৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে। 2014 আগতে মনত ৰাখিব, আপুনি এই বিষয়ে ভাবিবলৈ আচৰিত নহয়। 2014 চনৰ আগতে যেতিয়া বিজেপি শাসনত নাছিল, তেতিয়া মই পাহৰি যোৱা নাই যে প্ৰসাদে উদ্ভাৱনৰ ওপৰত এখন সংবাদমেল কৰিছিল। ইয়াৰ নাম জামাই আছিল, কিয়নো আপুনি জানে যে ছোনিয়াৰ জামাই ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰা আৰু ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ প্ৰভাৱ ব্যৱহাৰ কৰি বহুতো চুক্তি প্ৰাপ্ত কৰাৰ সকলো প্ৰয়াস কৰা হৈছিল। 9 বছৰ পাৰ হ'ব, প্ৰথমে কাৰ্যকাল শেষ হ'ল, এতিয়া দ্বিতীয় কাৰ্যকাল আহিছে, কিন্তু এতিয়া হঠাতে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে। তদুপৰি ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাক 9 বছৰ ধৰি উন্মোচিত কৰা উচিত নহয় নেকি? এতিয়া যেতিয়া নিৰ্বাচন ওচৰ চাপি আহিছে, 3 মাহ বাকী আছে আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰীক পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে বুলি গুঞ্জন উঠিছে। অৰ্থাৎ এই বিষয়টো ভয়ংকৰ হৈ পৰে। গতিকে সংস্থাবোৰে সঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী যোগ কৰিবলৈ সাজু নহয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে বিজেপিৰ আদৰ্শ ৰজাসকলৰ আদৰ্শ, ই কাৰো কথা নুশুনে। বিজেপিৰ আদেশ শীৰ্ষৰ পৰা আহে আৰু সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব। राहुल गांधी की कैसे सुनक। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता। राहुल गांधी এইটোও কৈছিল যে গণতন্ত্ৰ বিপদত আছে কাৰণ বিজেপিৰ সকলো প্ৰতিষ্ঠান দখল কৰিছে। তেওঁ এইটোও কৈছিল যে গণতন্ত্ৰ বজাই ৰখাটো সংবাদ মাধ্যমৰ কাম। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, কিন্তু সংবাদ মাধ্যম বিজেপিৰ সম্পূर्ण দাস। कॉन्स्टिट्यूशन आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, ये आपकी संस्थाएं हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। देश की जनता को কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও এই উপলক্ষে উপস্থিত আছিল। তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু RSSৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছিল। তেওঁ কৈছিল যে আমাক ব্ৰিটিছসকলৰ দাসসকলৰ পৰামৰ্শ নিদিব, আৰু এয়া স্পষ্ট যে তেওঁ RSSৰ বাহিৰে আন কাৰো কথা উল্লেখ কৰা নাছিল। তেওঁ হাবাৰাকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, যে বালিকাৰ বাছনি কৰি প্ৰায় 1 ডজন 12 ব্ৰিটিছৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল। ब्रिटिशरों को हमने भगाया है, क्या मोदी को डरेंगे? क्या बीजेपी को डरेंगे? क्या आरएसएस को डरेंगे? अरे वो लोग तो डर के ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है, ये डर के माफी नामा मांग लिए। तो ये लोग डरपुक है।
ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना, आप तो बहादुर लोग हैं। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो शेर है। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এক শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি কয় যে যদি RSS বন্ধ কৰা নহয় তেন্তে দেশখন ধ্বংস হ'ব। कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं, और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया, वो भी खत्म हो जाए। যোৱা দিনবোৰৰ পৰা যি হৈ আছে সেয়া হ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰন্তৰ যুৱক যুৱতীসকলক লগ কৰি আছে। মনত ৰাখিব, ৰাহুল গান্ধীয়ে বিহাৰৰ পৰা প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত যাত্ৰা কৰা অগ্নি আঁচনিৰ নামত প্ৰতাৰিত হোৱা যুৱকসকলৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীত বাস কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ জাছাৰে য'ত তেওঁ মল্লযোদ্ধাসকলক লগ পাইছিল, তেওঁলোকক লগ পাইছিল, তেওঁলোকে নিৰন্তৰ চাকৰিৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আছে। এটা সমস্যা যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুৰ্বল স্পন্দন। ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰন্তৰ কৈ আহিছে যে সৰ্বোপৰি মোদী চৰকাৰে কিমানজন লোকক নিযুক্তি দিছে। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की। हरी क्रांति देश के किसानों ने की। किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया। कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, और हिंदुस्तान के युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है। आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। ইয়াৰ বাবে তেওঁ লগ পোৱা যুৱকসকল যি বিহাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈছিল, সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে উপেক্ষা কৰা বাতৰিটো ব্লেক হৈ পৰিছিল, কিয়নো বাতৰিটো বহুত ডাঙৰ আছিল। যদি কিছুমান যুৱকে 1000 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি দিল্লীলৈ আহি আছে, তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল, কিন্তু সেনা বাহিনীত স্থায়ী চাকৰিৰ বিষয়ে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে উপেক্ষা কৰা হৈছিল। ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰৱৰ্তী অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ বিষয়ে মোদী চৰকাৰকো আক্ৰমণ কৰিছিল। শুনক ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে। कुछ युवा आए मुझे कहते हैं, राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी, रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे, आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है। इतनी भी इज्जत नहीं रखी, उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया, बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला, और पूरा का पूरा फायदा
देश का धन। ৰাহুল গান্ধীয়ে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনত যিটো বিষয়ৰ সুবিধা লাভ কৰা নাছিল সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল। অৰ্থাৎ আপোনাৰ উপস্থিতি অনুসৰি আপোনাৰ ক্ষমতাত অংশগ্ৰহণ, আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেনেকৈ আমোলাতন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো পিছপৰা জাতিৰ লোকক উপেক্ষা কৰা হৈছে। আৰু শুনক, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस के अफसर हैं, पूरे बजट को बांटते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। ओबीसी की कम से कम 50% आबादी है, दलितों की 15% आबादी है, आदिवासियों की तकरीबन 12% आबादी है। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं। कैसी ओबीसी सरकार चल रही है? उनको कोने में बैठा देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा देते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, 100-200 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो इनमें कौन सा ओबीसी है, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में दिखा दो। आबादी आपकी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 12%, और भागीदारी आपकी कहीं भी नहीं। टॉप कंपनीज का नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में ओबीसी कहां बैठा हुआ है, दलित कहां बैठा है, आदिवासी कहां बैठा है। और ये सिर्फ मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, हर फील्ड में ये हालत है। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके। ইংৰাজীত প্ৰায়ে ব্যৱহৃত এটা পৰিভাষা হৈছে ডেভিড বনাম গোলাপ। মই আপোনাক ক'ম ইয়াৰ অৰ্থ কি। প্ৰতিযোগিতাখন দুজন লোকৰ মাজত হয়, কিন্তু এজন অতি শক্তিশালী ভীমাকে আৰু আনজনে তেওঁৰ খেলখনত শাৰীৰিকভাৱে ৰোপণ কৰিছিল, কিন্তু উৎসাহিত হোৱা নাছিল। এইটো বহুত মূল্যৱান। ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো বহুত কঠিন, কিন্তু তেওঁ পিছ পৰি থকা নাই। তেওঁলোকে RSSৰ মুখামুখি হৈছে, তেওঁলোকে বিজেপিৰ সৈতে যুঁজ দি আছে, তেওঁলোকে RSSৰ মুখামুখি হৈছে। আৰু ক'ব পাৰি যে স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসত RSS নেহৰুক সিমান ঘৃণা কৰিছিল, সম্ভৱতঃ তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক যিমান ঘৃণা কৰিছে সিমানেই তেওঁ RSS তেওঁৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ বিভাজনকাৰী আদৰ্শৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে একেধৰণে মাত মাতি আছে। পাৰ্থক্যটো হ'ল যে যেতিয়া নেহৰুৱে ভাষণ দি আছিল তেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে শাসনত আছিল। ৰাহুল গান্ধী ক্ষমতাৰ পৰা বহু দূৰত আছিল, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনত আছে, যাৰ নাম বৰ্তমান বছৰবোৰক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবে দৃশ্যমান। লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু এই সময়ত এটা ডাঙৰ পাত্ৰই কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক পৰাস্ত কৰা সম্ভৱ। আৰু এই পৰিস্থিতিত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি আৰু RSSক পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। যদি তেওঁ এই যুঁজত পৰাজিত হয় তেন্তে তেওঁ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত হেৰাই যাব, কিন্তু যদি তেওঁ এই যুঁজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁ বিশ্বাস কৰক যে সকলো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিব। কিন্তু তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছে কিছু কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিবনে নাই সেয়া চাব লাগিব। ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিবনে? কংগ্ৰেছে নীতি সম্পৰ্কে দেশৰ জনসাধাৰণক এক নতুন চিন্তাধাৰা, এক নতুন দিশ দিব পাৰিবনে? কিয়নো কংগ্ৰেছে এনে নকৰিলে ই বিকল্প হিচাপে ওলাই আহিব নোৱাৰাটো স্বাভাৱিক। আজিৰ কাৰণে জিয়াউৰ ৰহমানক দিয়ক বিদায়। নমস্কাৰ। মুক্ত আৰু স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকতাক সমৰ্থন কৰক, মোৰ অংশীদাৰ হওক, সত্যৰ এই যাত্ৰাত মোৰ সৈতে থাকক। ধন্যবাদ।